is about Thevenin's theorem. What is Thevenin's theorem? By application, we mean that we apply Thevenin's theorem to find any load's current or voltage. For example, our question is like this. Find the current of this, and this resistor value is R, and in question it is written R is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and you need to find I of every different resistor. So what we should do? Can we do, for example, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5 ampere. Can we do R current to 2? Yes. No. Because if we want to find its current, then we need to keep it separate. So we will apply for the mesh. Okay. How many mesh analyses are required? How many meshes? 3. So we will try to find its value. And now this is done for 1. What we will do for 2? We will solve it again. Or we will change the variables. Then 9 times. So it means if one value of an equation is changed, so it means you need to solve it again. Solve it again. 9 times you are solving it. It's a very difficult problem. But what if we change it, the whole circuit? Okay. Now, if we convert this much problem into this circuit, now even if you change it 9 times or 100 times, we can find the I. How? V upon, and now 9 times applying this equation will give the separate result. So which method is easy? By converting into this equivalent, or solve it by keeping this method? Which one is easier? ये वाला? नहीं, ये वाला तो कभी भी नहीं। एक सवाल करने में जान जाती, उस एक सवाल को 9 दफा करेंगे तो 9 अलग-अलग आंसर आएंगे। I is equal to V upon R. These two are in series. I is equal to V upon R. So simple. R Thevenin or R, they both are in series. Ohm's law. V is equal to I. हटाना नहीं। तो हमने क्या करना है? हमने कुछ तरीके लगाने हैं। और उन तरीकों से इसको है नहीं, आंख बंद करके उसको ऐसा लिख देंगे। जाहिर बात है उसको ऐसा लिखने के भी कुछ क्या होंगे? रूल्स हो। और वो रूल्स क्या है? वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, द स्टेटमेंट ऑफ Thevenin's theorem, you can find it on the book. That Thevenin's theorem states that any linear circuit can be replaced by a voltage Thevenin source or a Thevenin resistor. ठीक है, पूरा स्टेटमेंट आपको ऐसे मिल जाएगा. Okay, whenever you want to find out the R Thevenin, you need to see the load terminals. First of all, you will locate the load terminals.
व्हाट आर द लोड टर्मिनल? ये जो टर्मिनल जिससे लोड कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये जो लोड जिस पे टर्मिनल कनेक्टेड है वो कहलाएंगे लोड टर्मिनल। तो सबसे पहले लोड टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर दिया लोड टर्मिनल को, फिर उसके बाद क्या करना है? रिमूव द लोड, रिमूव करेंगे लोड को एंड फाइंड आर थेवेनिन और आर इक्विवेलेंट थ्रू ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, यदि करना क्या है? करना बहुत सिंपल है। लोड को सबसे पहले क्या करना है? हटाना है और फिर यहां से देख के भी जो भी आर इक्विवेलेंट है फाइंड। नाउ रिमेंबर, you cannot find the R equivalent if sources are alive. So you need to cut all independent sources. कैसे? Current source is replaced by open circuit, करा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय ओके। एंड नाउ हाउ डू यू फाइंड द Thevenin? Thevenin is more equal चेक करो सारा आ रहा है। Thevenin you can find the voltage. Thevenin is the voltage of open circuit terminal. Thevenin क्या है? voltage of open circuit terminal. अब रिमेंबर, अगर किसी जैसे ओपन सर्किट टर्मिनल है और ओपन सर्किट टर्मिनल पे आपके पास क्या आ जाए? ये ओपन सर्किट टर्मिनल और इसके पैरेलल में क्या नजर आ रही है? रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब जो इस रेजिस्टर की वोल्टेज होगी वही क्या कहलाएगी? Thevenin। या फिर you can also do जो इस नॉट का जो वोल्टेज होगा वो ही क्या कहलाएगा? जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी वो कहेंगे आर इक्विवेलेंट को। अभी जब सवाल करेंगे तो ये और क्लियर होगा। Thevenin के लिए स्टेप क्या करना है? वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट फाइंड करना है, कोशिश करना है लुक फॉर पैरेलल रेजिस्टर और look for nearest node। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आप अब एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से। तो रिवीजन, जब भी कभी कोई सर्किट आएगा हमारे पास तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सर्किट, are the terminals A or B. This is the value R, and you need to find the current of it. So for R Thevenin, what we should do? For example, this is 2, this is 3, this is 4, this is
for our Thevenin, what we should do? First, remove all independent source, not dependent, independent. Dependent का एक separate method है, तो हम बाद में देखेंगे अगर टाइम मिला। किल करो all independent और remove load। remove load कर लो, चलो ये लो, ये हो गया लोड रिमूव। अब हम यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा, इधर क्या लगा हुआ है? इधर क्या लगा हुआ है? 3। हाँ भाई, करंट सोर्स के साथ क्या करना है? ओपन, बहुत सिंपल है। आगे क्या है? 4। वोल्टेज को क्या करना है? ये ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालनी है? कैसे? 4 3 4 and 3 3 5 और 2 आर आ गया। ठीक है। अच्छा, जब ये आर आ गया उसको क्या बोल दोगे? ठीक है। अच्छा, अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? दोबारा से रिमूव क्या रिमूव करना है? लोड रिमूव कर देंगे। चलो यही कर देंगे, ये लोड रिमूव हो गया। और मालूम इसका वोल्टेज करना है, इसका। अब नियरेस्ट लोकेट करना है, नियरेस्ट रेजिस्टर। नियरेस्ट रेजिस्टर है, मौजूद है, कौन है? जो इसका वोल्टेज होगा वही क्या होगा? Thevenin होगा। अब उसका वोल्टेज कैसे निकाल? Which technique is ideal? मॉडल से भी कर सकते हैं, मैथ से भी कर सकते हैं, और फिर और क्या कर सकते हैं? सुपरपोजिशन कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और केवीएल केसीएल कर सकते हैं, मीडियर सीडीआर कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपको आसान है। हाँ, उसका जो तरीका है, जो मेथड का तरीका वही लगाएंगे, बट कोई सा भी मेथड लगा। हाँ, कर सकते हैं अगर हो रहा हो तो। हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा, इस शक्ल को देखेंगे तो नहीं हो रहा। मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करें, बट इसको सॉल्व करके क्या निकालोगे? V। फिर V और R आ गया, फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इसको बोलते हैं V Thevenin, इसको बोल दो R Thevenin, और जब क्या लगा देंगे? आप लोड लगा देंगे, बेचारे को बार बार हटा लो, फिर बारी बोला मुझे भी तो लगाओ यार, मैंने भी तो पैसे दिए थे। और इसकी क्या फाइंड करना है? R। Which formula to be applied? Simple. I is equal to Thevenin upon load है तो R। Is this easy or not? Easy. Now let's do a problem and see what we are doing. So practice problem or example. So we will do a practice problem because example is already solved, so you can do it. You have a video recorded, so you will see from there or anyone's chat written. We will also upload anyone's lecture along with the video. Okay. Practice problem 4.8.
Thevenin's equivalent circuit and find R. Okay. So first of all, what we are going to do for Thevenin equivalent circuit? What is the first step? Find Thevenin. And in order to find Thevenin, what we are going to do? Remove the load terminal. What are the load terminals? A and B. This is the terminal. So we will remove it. 1 ohm, remove it. Keep it open and draw the circuit as it is. As it is. Or remove the sources. So what should we do with the voltage source? Short circuit. Resistor is there. What we do with the current source? Open circuit. Could be the यहाँ पे क्या बचा? Okay, so easy. 6 and 6 are in series, and the answer 12 is in यहीं पे लिख सकते हैं. 6 plus 6 parallel with 4. What's the answer? 3. What? 12 और 4 का parallel तो 3 होता है. Easy. Now, what should we do for Thevenin? First step is remove the load. Draw the circuit. Okay, भाई. ये बेचारी कितने की? This is Thevenin. Okay. Okay. Now, which technique is more? Now, identify. First step is remove the load. Identify Thevenin. Where is Thevenin? Look for the parallel resistor. If there is, very easy. So, example, this voltage will be the Thevenin. So we need to find out 4 ohms voltage or the load. For example, if you do this circuit by nodal analysis, for example, this is V1 and this is V2. We can do it by nodal analysis. So whatever the V2 will be, it will be equal to Thevenin. Easy. So, can we do it by source transformation? Yes. How can we do by source transformation? Now see, voltage source in series with 12 and 6, it will become a current source and a parallel resistor. Current source will be 2 ampere and a parallel resistor, and then 2 parallel current source, they will be added, and then this resistor and this, they will be in series. No. We will convert that current source into a voltage source, and then we will have a VDR circuit. So this is also one way. But what is the easiest way? Nodal. Use nodal that. Okay भाई, ये करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है.
तो आने वाले एक तरफ, जाने वाले एक। तो V1 का पहली इक्वेशन था V12 minus V1 upon 6. 12 minus V1 upon 6. Which one is coming? 2. 2 is also coming. Which one is leaving? V1 minus V2 upon. That's okay. और ये पेड़ आ रहा है, ये वाला एक ब्रांच से या तो आएगा या तो जाएगा। जैसे इक्वेशन पे वो अप डायरेक्शन ये आएगा डॉट के साथ, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर। इधर से देखेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वही है 12 वोल्ट, 12 minus V1 upon 6. Okay, we can multiply by 6. So 12 minus V1 plus 12 is equal to V1 minus V2. We can form a very equation V1 minus V2 is equal to 20. ठीक है? Okay. Now apply nodal analysis here. This is coming and this is going. So we will write V1 minus V2 upon 6 is equal to V2 upon 4. So we can multiply by 24. So multiply by 24, what we get? 12 से भी हो जाएगा, 12 से भी कर सकते हैं। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या? 2 V1 minus 2V2 is equal to 3V2. प्यार से लिखो उसको, 2V1. Now we have two equations. What do we need to find? Only V2. What is the V2? Do it by calculator. Huh? 6. So you write Thevenin is equal to 6. Okay. Now, what you have find? You have find Thevenin. You have also calculated Thevenin. Now, let's draw the equivalent circuit. Now, let's apply that load resistance. What is Thevenin? What is Thevenin? Okay, let's find out I. I is equal to Thevenin upon RL कितनी है? 1. Thevenin कितना है? 6 upon Thevenin plus RL 1. तो कितना आ गया? 6 upon 4. 3 upon 1.5. Easy. तो लोड Q. ये था ना? इसको बात करना रेड बटन